so first of all, Bismillahirrahmanirrahim, we are going to start from the very basic thing, that is present indefinite tense. So actually, what happens in our different interviews, and even when you people write, you commit the mistake of present indefinite tense. Whenever I ask the questions from the students, they always commit the mistake. I ask that please speak about present routine, ask about the past routine. So students commit different types of mistakes about this tense. So these tense are not very huge knowledge. This is really a small piece of knowledge, but the problem is with the understanding of the student. The students do not understand them in real life exposure. They don't apply the tenses on their practical life. Okay, one of you, please tell me about your past routine. Any one of you, please. Sir, as a student of data science, and I also work as a data analyst, so most of the time I spend my time to fulfill my client's requirements. And just recently, I done my project of a data analyst that was related to fast food. तो आपने स्पेंड का लफ्ज यूज किया पास्ट के लिए, पहली फॉर्म यूज की, फिर आपने कहा आई डन, और डन जो है कभी भी थर्ड फॉर्म जो है वो इस तरह यूज नहीं होती। तो इसी तरह की मिस्टेक्स को पेश नजर रखते हुए आज का मैंने लेक्चर डिसाइड किया है। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है और इसको हम अपनी लाइफ पे कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इसमें हम जब बात करते हैं तो ये हमारी प्रेजेंट परमानेंट एक्शंस के बारे में होता है। जो काम अपनी मौजूदा जिंदगी में हम रोज करते हैं, हमेशा करते हैं, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे किसी भी स्टूडेंट से जब ये पूछा जाता है कि व्हाट इज योर डेली रूटीन, व्हाट इज योर प्रेजेंट रूटीन, व्हाट इज योर हैबिचुअल रूटीन, तो स्टूडेंट बोलेगा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ऑफर फजर प्रेयर, देन आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, देन आई कम बैक, देन आई टेक बाथ, and then I change my dress, and then I eat my breakfast, and then I go to my university or college. I study there till 2 p.m. and then I offer Zohar prayer, and after offering Zohar prayer, I go to my hostel or my home, and I take some rest. So at all situations and sentences, you are observing first form of verb. Have I used second form? सर सेकंड फॉर्म में भी स्पेंड आता है ना, स्पेंड स्पेंड एंड स्पेंड। नो, सेकंड फॉर्म, यहाँ से ये भी पता चल गया कि आप लोगों को फॉर्म वर्ब की फॉर्म्स भी याद करनी है। तो इसने कहा स्पेंड स्पेंड और स्पेंड। नो, स्पेंड की जो फॉर्म है वो है स्पेंड स्पेंट स्पेंड, यानी जो अगली दो फॉर्म्स हैं उनमें टी लगता है एंड पे। ठीक है, स्पेंड स्पेंड स्पेंट। ओके, तो वर्ब की फॉर्म्स भी आपको आनी चाहिए। अगर आप राइटिंग टास्क कर रहे होंगे, अगर आप वहां पे वर्ब की फॉर्म रॉन्ग यूज की तो तब भी गलती है, और अगर आपने बोलने में यूज की तो तब भी गलती हो जाएगी। ओके ओके सर। ओके, सो मैंने यही चीज जानबूझ के आप लोगों से करवाई कि किसी से प्रेजेंट रूटीन पूछी तो उसने फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म लगा दी, सेकंड की जगह फर्स्ट लगा दी। तो हमें ये रियलाइज होना चाहिए कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल करके दिखाई कि जैसे मैं प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। हाँ, ये जब हम अपनी प्रेजेंट रूटीन बताते हैं तो इसमें थोड़ा एक चीज हम ये कर लेते होते हैं आमतौर पे कि हम जो है जब अपने मुख्तलिफ एक्शंस के बारे में बताते हैं तो हम ये यूज करते हैं लफ्ज ये करने के बाद। क्या कि नमाज पढ़ने के बाद मैं ये करता हूँ, ये करने के बाद। और करने के बाद की इंग्लिश होती है, जैसे कोई भी काम करेंगे तो उसके बाद, जैसे आई ऑफर प्रेयर। ठीक है, अब नमाज पढ़ने के बाद क्या, आफ्टर ऑफरिंग प्रेयर आई गो टू माई होम। ठीक है, तो जो भी काम करने के बाद की इंग्लिश होती है वो क्या होती है, आफ्टर ऑफरिंग प्रेयर, आफ्टर प्लेइंग। तो ये कंटिन्यूस वाली बात नहीं है, ये करने के बाद का उर्दू का जो हमारा एक एक्सप्रेशन है उसकी इंग्लिश है करने के बाद के लिए। समझ आ रही बात की, यानी ये इंग फॉर्म नहीं होगी। समझ आ गई, ये उसका एक प्रेजेंट के स्ट्रक्चर का यूज है कि हम ये यूज कर सकते हैं आई हैव ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, so then I go to my college, no problem. Okay, so during this lecture, if you have any question, you will ask question at the end. Okay, so if we see here, they are looking at their books. ठीक है, अभी वो अपनी किताबों के ऊपर देख रहे हैं। तो we read a lot, we read a lot, हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। they read a lot, वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। तो इसी तरह ये जो मोहतरम है ये आइसक्रीम खा रहे हैं,
ही इज ईटिंग एन आइसक्रीम, अगर हम उसके किसी कंटिन्यूस एक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम यही कहेंगे ही इज ईटिंग आइसक्रीम। तो लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि वो आइसक्रीम पसंद करता है तो हम कहेंगे ही लाइक्स आइसक्रीम। क्यों कहेंगे कि ये उसकी जिंदगी का परमानेंट एक्शन है। ही लाइक्स आइसक्रीम, ही लाइक्स वेजिटेबल्स। जो भी काम हम अपनी जिंदगी में मुस्तकिल बुनियादों पे मौजूदा वक्त में करते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेजेंट परमानेंट हैबिट। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परमानेंट हैबिट, हैबिचुअल एक्शन, डेली एक्शन, डेली रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, एवरीथिंग विल बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हैव यू गॉट द आइडिया? ठीक है, तो फिर फॉर्म कौन सी यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म। और अगर आप कोई ऐसा कहें कि जब भी आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि ही लाइक्ड आइसक्रीम, इसका मतलब ये है कि वो आइसक्रीम पसंद करता था, अब नहीं करता। लेकिन अगर वो अभी भी अपनी जिंदगी में मुश्किल बुनियादों पे आइसक्रीम पसंद करता है तो ही लाइक्स आइसक्रीम। हैव यू गॉट द आइडिया? जब हम कहेंगे ही लाइक्ड, इसका मतलब सेंस ही चेंज होगी ना, कि वो आइसक्रीम पसंद करता था। तो जब हमने कहा वो पसंद करता था तो इसका मतलब अब वो पसंद नहीं करता। ये बात सीधी सी है ना, कि वो पसंद नहीं करता। इसका मतलब ये है, अगर हम ये एक्सप्रेशन देना चाहते हैं कि जैसे आप अपने बारे में बताना चाहते हैं कि आई लाइक गेम्स, तो आप ये नहीं कह सकते आई लाइक्ड गेम्स, तो वो तो पास में हो गया। इसका मतलब ये कि अब आपको गेम्स पसंद नहीं। तो कितना सेंस में फर्क है फर्स्ट फॉर्म का और सेकंड फॉर्म का, इस सेंस को अपने दिमाग में आपने बिठाना है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है, if we talk about the structure, so you can see here that we use first form with the I, we, you, they. We say I read books, I like work, I live in Sahiwal, I watch television, I do work, I have lunch or breakfast. Okay, but when we use he, she, it, we use he reads, he likes, she likes. It works very well. He lives in Lahore. She watches games. She does work. She has a car. Okay? She has breakfast early in the morning. Have you got the idea? Okay? So this is somewhat structure. So in your writing, in your speaking, you will not mix up the things. You cannot say I likes apples. I likes तो नहीं हो सकता ना. So this difference must be in your mind, in your brain, and you must learn it. Don't commit the mistakes. Remember, he works, she lives, it rains. I work in a shop. My brother works in a bank. When you talk about I, so you say I work in a shop. But when you say my brother works in a bank, not my brother work. Okay, you have, because it's single, so you will use works. Linda lives in London. Her parents, parents क्योंकि plural है, तो फिर क्या होगा? Her parents live in Scotland. It rains a lot. So have you got the idea? Okay, so when we talk about the singular and the plural, we have to keep in mind that we have to use the verb according to the subject. Linda, singular, lives. Her parents live. Have you got the idea? Yeah. Like here, I will tell you with the mouse as well. Linda lives, her parents live. So we must keep in mind that difference. Usually students commit the mistakes like this. So we can use the use of has and have as well. So I have, he has, she, it has, John has a shower every day. Actually, here, if we talk about has, have, had, so this is used as a verb as well. This is used as a verb. It means that this is just used as a first form of the verb here. Okay, has, have has double role when we use in present perfect. He has finished work. He has finished work. So has is having some sort of tense meaning. Has is used to show the complete action in the present. So here it is helping verb. Here it is he has finished work. But here it is used as first form of the verb, as we are using like, play, so on. So spelling. So this is very important rule, and most of the time the students are not aware about this. We oftenly say that we use s or es with the he, she, it, or the singular. So we don't know which verbs will get s, which verb will get es. So here you can see the rule of spelling. If the word is ending with es or after s or sh or ch, we use es. Like here is double s, so we are watching here that there is the word es, passes. He passes exam every time. So we are not using single s here. He finishes work very early on daily basis. So the word is ending with sh here, sh, and we are adding es at the end of this word. Watch, watches. And in the same way, when we talk about the word ending with y, so we are
removing y and adding ies at the end of such verbs. Okay, try, tries. Have you got the idea? So y will be eliminated from the end of the word, and in place of y there will be ies. So this is spelling rule. Also, do, does, go, goes. So with do we add es, with go we use es, not s. So we use the present simple for things that are true in general, or for things that happen sometimes or all the times. I like big cities. The shops open at 9 o'clock and close at 5:30. Tim works very hard. So the things that are true in general, or things that happen sometimes or all the times. The sun rises in the east and sets in the west. हमेशा होता है ना काम ये, तो इसलिए we universal truths, so they always happen. So we use also the same structure for that. He starts at 7:30 and finishes at 8 o'clock in the evening. The earth goes around the sun. We do a lot of different things in our free time. We do a lot of different things in our free time. It costs a lot of money to stay at luxury hotels. Always, never, often, sometimes, usually. So this is very important that in present simple we use these words mostly: always, never, often, sometimes, usually. So often word in American English it is spoken as often, and in British English it is spoken as often. Okay, T is silent in British English. So we can see here some examples as well. She always arrives at work early. Okay, not Sue arrives always. Okay, so we want to tell you that the place of always is also very important. That Sue always arrives. So we use always after subject here. Okay, Sue always arrives at work early. Not Sue always. Sue is name. Okay, Sue arrives always. We can't say. So we will use always word after the subject and before the verb. Got it or not? Okay. I usually go to work by car, but sometimes I walk. Not I go usually. Okay. I usually go. Usually will be at the start. Julia never eats breakfast. Tom lives near us. We often see him. We after the subject we use often. So we can see the use of always, usually, sometimes, and often. Have you got the idea about the present indefinite, present simple? We use these words to show the action is happening every day. So now you can ask the question about the present indefinite tense. I have just told you, and you people will tell your present routine tomorrow. You will tell, I get up in the morning, I offer Fajr prayer. Whatever you do, you will come at rostrum, and as you will come in the class tomorrow, you will speak on one cue card topic, and then you will also speak about your daily routine. Everyone will speak about his daily routine on rostrum. As you will come at 11 o'clock, you have to do that. Okay, you must do that because we have to apply the tenses